Okay, very good morning to all of you. Now, today, again, we will going to see two problems, problem number 15 and problem number 16. And this, both the problem are different from each other and a very unique problem. In problem number 15, one partner will get a percentage on a distribution of an amount to a partner as well as realization of an amount. So that we will going to see. Let's see this problem. Given below is a balance sheet of ABC as on 31st March 2020, on which date they dissolved their partnership. They shared profit and loss in the ratio 4:3:3. Since the realization of asset was protest, they decided to distribute amount as and when feasible and to appoint C. This is an important point, to appoint C for this purpose, who was to get as an his remuneration 1% of the value of the asset realized and 10% of the amount distributed to the partner. वो क्या कह रहा है 1% किस पे मिलेगा on the amount realized. So there are 4 realizations. So on this 4 realization he will get 1% on the value, and second 10% he will get separately, okay, on the amount which is distributed to the partners. ठीक है, इससे पहले हमने एक प्रॉब्लम किया था जहां पर हमने देखा था कि मिस्टर सी को लमसम में 10,000 रुपीज दे दिया था एंड ही विल गोइंग टू मैनेज ऑल द शो, he will bear all the expenses, he will do all the realization, he will distribute the money, everything he will do. The same point is here also, but here instead of giving a lump sum amount, what we have decided to give percentage of the work. So whatever amount that will going to realize उसका 1% मिलेगा and जो partner को पैसे दे रहे उसका 10%. The rest of the problem very simple. On the balance sheet, on the liability side, we have a two liability: capital liability in the form of partners capital and external liability in the form of sundry creditors. Whereas on the asset side, cash at bank is 275. So shall we move to the worksheet? Okay. So now, first of all, let me statement of excess capital. So here we have a statement of excess capital. First of all, let's see what are the actual capital of ABC. The actual capital of ABC is 15,000, 7,500 and 15,000. So 15,000, 7,500, 15,000. Okay. The profit sharing ratio is 4:3:3. So this is the information which is given. Now our problem starts from here. Actual capital divided by individual PSR. We will get unit value of all the three partners. So here the unit value of P is minimum, that is 2,500, multiplied by individual PSR to get proportionate capital. So 10,000 for A, 7,500 for B and 7,500 for C. Now in the third step, we will get excess capital, which says actual capital minus first proportionate capital. So we got 5,000 for Mr. A, 0 for B and 7,500 for C. Now we got excess capital for two partners. So once again, we will going to calculate unit value so that we can able to calculate ultimate excess capital. The formula says excess capital divided by individual PSR. Okay, and we got a minimum balance of smallest unit of Mr. A, that is 1,250, and to calculate proportionate capital second time, we have to take a smallest unit value multiplied by individual PSR. So for A, we are getting 5,000. and here we will get 3,750. Okay. So ultimate excess capital of A is 0, B is 0,
and C we have to pay 3,750. So first of all, we will going to pay 3,750 to Mr. C. Then we have to pay 8,750 to Mr. A and C, and finally we have to pay 25,000 to all the partners. Up to here, everything is clear. Now we are moving to piecemeal distribution of cash. So this is a balance which is already written for all of you. Creditor, let verify. Creditor balance is, we have 16,500, and partners capital, as we have already written the excess capital, so we know 15,000, 7,500 and 15,000. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कैश अवेलेबल है we will pay to creditors. Pay to creditors. Amount is 270, 275, 275. So here we got 0. Here we got 16,225. Now we'll go for first realization of assets. पहले realization में कितने पैसे मिल रहे हैं? Look at here. We are getting 16,250. 16,250. So here we will write 16,250, and as per the arrangement with a C, it was decided that he will get a remuneration of 1% of the value of the asset realized. ठीक है, जो वैल्यू रियलाइज उस पे 1% उसको क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन. तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेस 1% remuneration to Mr. C on realization of assets. ठीक है, 1% कितना हुआ बेटा, 16,250 का 163. 163 हुआ ना बेटा, 1% of 163. Yes, sir. 163. Okay. So the available cash is 16,087. This amount we will pay to the creditors. 16,087. So here we don't have a cash available. Here we have to pay some around 128 still to Mr. to creditor. Amount is correct. सर 87 लिखेंगे ना, 87 लास्ट में 87 लिखेंगे ना, 1687. Okay. Printing mistake. So it comes 138. Now we'll go for second realization. Sir, खिड़की बंद कर. Second realization, and from the second realization we are getting how much amount? 12,750. 12,750 we are getting. Now again we will going to pay 1% remuneration of the amount realized. So 128. So available cash is minus commission इतना है. इसमें से हम क्या करेंगे, we will into creditors. 138
So here amount is 0 और यहाँ पे कितना बचा, ठीक है 12,484. ये अमाउंट वो अमाउंट है, हाँ बच्चे, Yes, sir. Right. ये अमाउंट वो अमाउंट है जो हमको पार्टनर्स को देना है. बट एज पर द अरेंजमेंट लुक एट हियर, पार्टनर को जो भी पैसा हम बांटेंगे उसमें का 10% कमीशन हमको देना पड़ेगा. इसको मिस्टर सी को. लेट्स सी 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स. ठीक है, अभी आगे जो भी पैसा बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर को, तो 10% देना पड़ेगा जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया. नाउ लेट्स सी, here we will going to write less 10% ration paid to Mr. C on amount paid to partners, यानी हो गया 1/11. ठीक है, अब ये देखिए 1/11 मैंने क्यों लिखा है. ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करना ना, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी अमाउंट है XYZ, ये अमाउंट के ऊपर मुझे 10% देना है. ठीक है, ना कि मुझे इस अमाउंट पे देना है. Because the point says the amount which is distributed to the partner, on that he is getting 10%. तो ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है इसके अंदर आपका 110% है, क्योंकि 10% इसके अंदर आपका कमीशन भी इंक्लूड है. सो व्हाट विल बी द 10%? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कितना होगा, दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय 110. So we are getting 1135. Okay, now let's see the amount which is available for distribution, 11,349. अब आप लोग ध्यान से देखिए, 11,349 मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका 10% कितना होगा, ये पर्टिकुलर अमाउंट का 10% कितना होगा, 11,349 का 10% कितना होगा, जो ऊपर मैंने अमाउंट लिखा उतना ही होगा ना. Is it clear to all of you? Yes, sir. 11,134.5. बराबर ना, उतना ही आया ना. अगर मैं Yes. 12,000 पे कैलकुलेट करता तो मेरा अमाउंट इधर ज्यादा आता और मैं अमाउंट कम डिस्ट्रीब्यूट करता पार्टनर का. बट एज पर द अरेंजमेंट दे आर सेइंग कि जो अमाउंट मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना, ये अमाउंट मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये अमाउंट के ऊपर 10%, तो ये परसेंट 10 ले लिया मैंने. सो व्हाट आई विल राइट नाउ, आई विल पे टू माय पार्टनर्स एज पर एक्सेस कैपिटल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पे टू मिस्टर सी. कितना पे करना है मिस्टर सी को, उसके लिए एक्सेस कैपिटल मुझे देखना पड़ेगा 3750. सो हियर आई विल राइट 3750. तो सी के लिए आ गया 3750. सो हियर इट विल बी 15,000 minus 11,250 if I'm not wrong. Yes, and here I'm getting cash with me is this much amount. Now I have to pay to Mr. A and Mr. C. Mr. A and Mr. C. How much I have to pay? For that purpose, again I will refer statement of excess capital 8,750. But that much cash I don't have. So whatever cash which is available with me, I will distribute to the partner in their profit sharing ratio. Their profit sharing ratio is 4:3. So this particular amount divided by 7. So I got 1,085. So here I will write 1,085 multiplied by 4. So I got 4,342. Okay, and this particular amount multiplied by 3, I got answer
3,257. Okay, so the total of these two should be 7,599. So that what I'm getting. So here my balance is 0. Now look at here. Here it will be 15,000 minus this particular amount, and okay. Now we'll go for third realization. Third relation of asset. थर्ड रिलेशन ऑफ असेट. थर्ड रिलेशन ऑफ असेट में मेरे को दो चीजें करने की. पहले तो अमाउंट देखता हूँ कितनी है. 10,000. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू पे 1% रेम्यूनरेशन ऑन रियलाइज. ये 10,000 है, उसके ऊपर 1% देना पड़ेगा पहले. ठीक है, ये आ गया 100. देन आई हैव टू पे 10% रेम्यूनरेशन ऑन अमाउंट पेड टू पार्टनर्स. अब मैं पार्टनर को पे करने वाला हूँ सारा पैसा ये वाला, तो उस पर 10% है रिवर्स कैलकुलेशन. So it will come 900 because 9,900 divided by 11 comes to 900. So total amount for distribution is 9,000. इसमें सबसे पहले हमने मिस्टर ए और मिस्टर सी को देना बाकी रह गया था. How much we have to pay? 1% will be 1,000, right? Pardon? 1% remuneration will be 1,000. No, beta. 1,000 will be 10%. Okay, sir. Okay. अगर 10% लोगे तो 1,000 आएगा, 1% लोगे तो 100 ही आएगा. Okay, sir. तो हमको मिस्टर ए और मिस्टर सी को पैसा पे करना था. कितना टोटल? 8,750 पे करना था, लेकिन हमने कितना पे किया? हमने सिर्फ 7,599 पे किया. तो स्टिल 1,151 मोर वी हैव टू पे. ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पर आ गया 658 और यहाँ पर आ गया 493. So look at here. Here it will be 10,000, 7,500 or 7,500. Now we reach to the level of first proportionate capital. Now from here onward we will going to pay to all the partners. So we will write less paid to all partners 7,849 divided by 10. डिवाइड बाय 10 करो, कितना आया? So this particular amount divided by 10. So we got 780. 84.90 for 1 unit. So let multiply by this particular amount, multiply by 3. तो यहाँ पर रहेगा 2355. सेम विल कम हियर 2355. और यहाँ पर कितना आ जाएगा? This particular amount minus this minus 3139. Okay, 3139, because our total should be 7,849. If you multiply by 784.9, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर 40 आएगा, 3140. लेकिन we have to make an adjustment ताकि ये adjust हो जाए, otherwise there will be a problem. ठीक है, minus. Okay, now we'll go for fourth realization, which is a last realization. So here fourth realization gives us a sum of rupees 7,500. ठीक है, वापस इस पे से दो चीजें हम क्या करेंगे, लेस करेंगे.
तो यहाँ पर कितना लेस हो जाएगा, 775 माइनस हो गया, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर अमाउंट माइनस 75 इतना आ गया, और यहाँ पर आएगा this particular amount divided by 11 so that we can able to know the 10% commission, ठीक है, minus this particular amount. Let's see now the amount which we will going to distribute and the amount of commission exactly come into a ratio of 10%, ठीक है. So this amount we will going to pay to all the partners 6,750. Okay, pay करो सारे partner को and tell me how much it comes. $675 multiplied by 4, 2,700. Here 675 multiplied by 3 comes to 2025. 25. Okay, so let's see how much loss we are getting. Now let's see, if you see the total loss is 10,401. ये 1 रुपये इसलिए है because we have round off the thing. If you try to find out the ratio between these partners, it will be in the ratio of 4:3:3. करके देखो उसी रेशियो में आ रहा होगा. Yes, sir. आ रहा उसी रेशियो में. Yes. Now let's see, this is the entire problem for you. अगर समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे. चले आगे की तरफ. Yes, sir. 1990. Okay. This is problem number 16. ये प्रॉब्लम नंबर 16, ये भी थोड़ा सा यूनिक टाइप का प्रॉब्लम है. देखिए जरा. Monica, Sonika and Ronika shares profit and loss in the proportion of 2:1:1. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. We have a creditor of rupees 10,000, that is external liability. We have internal liability of Sonika and Ronika, ठीक है, that is internal liability, and capital liability in the form of reserve fund, contingent reserve and capital of Monica, Sonika and Ronika. On the asset side, important information is cash of rupees 6,000 available. उसके नीचे लिया हुआ लोन टू मोनिका, ठीक है. ये लोनिका को लोन दिया हुआ है. ये स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में नहीं आएगा बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल, सो दैट विल बी टेकन सेपरेटली, ठीक है. एंड दैट इज इंक्लूडेड इन द रियलाइजेशन. सो वी विल नॉट गोइंग टू थिंक मच अबाउट इट. वी आर ओनली कंसर्न विद कैश अवेलेबल. The firm is dissolved and the assets are realized as follows. There are total 3 realization. Okay. On the date of dissolution, there was a contingent liability of rupees 2,000. ठीक है. ये जो 6,000 का रिजर्व बनाया था उसमें से बोल रहा है कि 4,000 तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन 2,000 का आपका क्या है बेटा, ऑलरेडी एक कॉन्टीजेंट है, ठीक है. तो 2,000 को हम सेपरेटली निकाल के रख देंगे. वी विल मेक अ प्रोविजन ऑफ इट which was settled in the second realization, at the time of second realization. तो second realization यहाँ पर हमने उसको settle कर दिया. कितने का प्रोविजन था, 2,000 का हमने बनाया और सेटल कितने पे किया, 1,500 पे. सो वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 500 एंड दिस 500 प्रॉफिट अगेन वी विल ऐड बैक टू कैश बिकॉज वी हैव टेकन 2,000 फ्रॉम अ कैश, और बाकी का जो 500 बचा है वो कैश में भी ऐड कर देंगे और साथ में पार्टनर्स को भी दे देंगे.
Second, realization expenses were estimated rupees 2000, but this actual amount to rupees 1200. 2000 का रिलेशन एक्सपेंसेस का प्रोविजन बनाना, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है 1200. ये हमेशा कब एडजस्ट होगा? एट द टाइम ऑफ लास्ट रियलाइजेशन. एंड योर थर्ड रियलाइजेशन इज योर लास्ट रियलाइजेशन. अ फर्म was to pay rupees 600, ठीक है, आउट ऑफ द थर्ड रिलेशन फॉर विच नो प्रोविजन वाज मेड. नई प्रोविजन मेड है तो माइनस कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सोनिका टुक स्टॉक वैल्यूड रुपीज 1000 एट द टाइम ऑफ थर्ड रियलाइजेशन. थर्ड रियलाइजेशन के टाइम में 1000 का स्टॉक भी ले गया, सो दैट विल बी एडेड टू योर रियलाइजेशन. I think problem is simple, only 2-3 technical point that we will discuss. Shall I move to the worksheet? Yes, sir. Here you have a statement of excess capital. There are three partners, Monica, Sonika and Ronika. Let's write down their capital. 40,000, 10,000 and 5,000. Okay. The profit sharing ratio is 2:1:1. Now let's see general reserve. General reserve का बेटा आपका 8,000. So this will be 4,000, 2,000 and 2,000. Now here I have written contingent reserve 6,000 minus 2,000, क्योंकि 2,000 का लाइबिलिटी है. ठीक है, रिजर्व हमने 6,000 का बनाया हुआ था, जो हमारे प्रॉफिट में से बना हुआ है. ठीक है, इसमें से कह रहा है कि खाली 2,000 का ही प्रोविजन, 2,000 का ही कॉन्टिजेंट रह गया है, यानी बाकी 4,000 फ्री हो गया. तो जो 4,000 फ्री हो गया दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Okay, so that make a total of it 46. 46,000 और यही यहाँ पर लिख रहा हूँ. 30. ठीक है, now we will going to calculate what excess capital. Formula is very simple, adjusted capital divided by individual PSR. ठीक है, यहाँ से पता आ गया. So 8,000 is the smallest unit, so 8,000 from smallest value multiply by individual PSR. Here it will be 16,000 और यहाँ पर हो गया 8,000 and 8,000. 8,000. ठीक है, so let's see 46,000 minus 16, 30,000 आया और सोनिका का 5,000 और रोनिका का 0. Now we got excess capital of two partner. तो हम वापस से शुरू करेंगे. Excess capital divided by individual PSR 15,000 और सोनिका का 5,000. ठीक है, so 5,000 is smallest unit, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हियर इट विल बी 10,000. यहाँ पर 5,000 0. So we got a excess capital which we have to pay to Mr. Monica rupees 5,000. ठीक है, क्लियर हो गया. 5,000 मोनिका, उसके बाद में 15,000 टू मोनिका एंड सोनिका, एंड फाइनली हाउ मच वी हैव टू पे 32 plus 60, 48,000 to all the partners as per their PSR. Okay, now let's move to piecemeal distribution of cash. Here I have written some point for all of you. Balance, opening balance, let's check. Cash was 6,000. Okay, creditor was 10,000. सोनिका और रोनिका का इंटरनल होता 6 and 4,000. Okay, and this is a capital which we got from adjustment. So adjusted capital we have. So सबसे पहले हमको दो प्रोविजन बनाने हैं, एक तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का और दूसरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का. So as per rule, first of all, we always give preference to realization. Provision for realization expenses. So here it will be 2,000.
4,000 बचा. Now we will going to make a provision for, let's provision for contingent liability 2,000 बचा 2,000. This 2,000 will be paid to creditors. Two thousand, so balance is 8,000. Now we'll go for first realization. Add फर्स्ट रिलेशन कितने का है 12,000. ठीक है, सबसे पहले हम किसको पे करेंगे, क्रेडिटर्स को. हाउ मच 8,000. सो क्रेडिटर बैलेंस इज 0 और यहाँ पर बचा हमारा 4,000. नाउ दिस 4,000 विल बी पेड टू सोनिका एंड रोनिका. सो आई विल राइट लेस पेड फॉर इंटरनल लाइबिलिटी 4,000. 4,000 क्या करेंगे बेटा, रेशियो में डिवाइड करेंगे. क्या रेशियो हो गया बेटा इनका दोनों का 3:2. तो 4,000 डिवाइड बाय 5. टेल मी हाउ मच इट कम्स. 4,000 डिवाइड बाय 5 800, यानी ये हो गया 2400 और ये 1600. ठीक है, माइनस दिस पर्टिकुलर अमाउंट. Now we'll go for second realization. सेकंड रिलेशन कितने अमाउंट का बेटा 25,000. अब यहां पर देखिए, इन्होंने कहा है जो हमने लाइबिलिटी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का बनाया था, ठीक है, द फर्म विच वॉज सेटल्ड एट ₹1,500 एट द टाइम ऑफ सेकेंड रियलाइजेशन. सेकेंड रियलाइजेशन के टाइम में वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हमने सेटल कर दिया 1,500 में, 500 रुपए बच गए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एड एक्सेस प्रोविजन ऑफ contingent liability 500 ऐड हो गया. ठीक है, ये हो गया 25,500. लेकिन ये जो 500 contingent liability का था, ये हमने क्या किया था बेटा, यहाँ से देखो 2,000 का प्रोविजन हमने यहाँ से माइनस किया था. यानी ये पार्टनर्स के पैसे थे जो हमने साइड में रख दिए थे. तो जो पैसे बचे वो क्या करेंगे, पार्टनर्स को ही दे देंगे वापस. ठीक है, तो 500 विल बी डिवाइडेड अमंग्स द पार्टनर. 500 डिवाइड बाय देयर रेशियो. रेशियो क्या था 2:1:1. करो कितना आया पर यूनिट. I can say 500 divided by 4 125. 125 और ये हो गया 250. तो यहाँ पर अभी इनका नया कैपिटल बैलेंस हो गया, न्यू एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस. हाउ मच इट इज 46,250. इसका हो गया 13,125. इसका हो गया 8,125. ओके, नया. सर हाँ ये वापस एक्सप्लेन करेंगे क्या, क्यों 500 रुपए बांटे इन लोग को? बेटा ये हमने कॉन्टीजेंट रिजर्व बना रखा था. कॉन्टीजेंट रिजर्व है ना, वो एक तरह का रिजर्व फंड होता है. ठीक है, उस रिजर्व फंड में से हमने 2,000 रुपए साइड में निकाल दिए, बोले यार कॉन्टीजेंट हो सकता है हमारा. ठीक है, अगर वो 2,000 का कॉन्टीजेंट नहीं होता तो 2,000 रुपए पार्टनर को बढ़ जाते आपस में.
बढ़ जाते कि नहीं बढ़ जाते? यस सर। देखो यहाँ पे अगर 2000 का अगर कॉन्टीजेंट नहीं होता तो 6000 होता, 6000 पार्टनर में बढ़ जाता ये, यस है कि सर। नहीं? तो अभी जब 2000 साइड में रखा, उसमें से 1500 का खर्चा हो गया, 500 रुपए जो बचे ना, तो ये तो 500 रुपए वो हैं जो पार्टनर के थे। यस सर। भले कैश बढ़ेगा लेकिन पार्टनर का भी तो कैपिटल बढ़ेगा, पार्टनर को देना पड़ेगा ना पैसे वो। लेकिन यस पार्टनर को सर। हम कब देते हैं? पहले सब इंटरनल एक्सटर्नल पे करने के बाद में पार्टनर को देंगे, खाली पार्टनर का लायबिलिटी हम बढ़ा देंगे लेकिन पैसा देंगे एंड में, ठीक है? ओके। नाउ ओके सर। वी विल पे इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में हमको और पे करना था कितना? 6000, 6000 3600। 36 मैंने आपसे 24 कहा था हर प्रॉब्लम एक दूसरे से अलग होगा। So here it will be 19,500. ठीक है? Now let's see how much we have to pay as per the excess capital. We have to pay, नहीं गड़बड़ है, हमको ज्यादा पे करना है। 30 minus 10,000, 20,000 we have to pay. Okay, so we have to pay 20,000 to Mr. Monica, sorry Miss Monica. So we write less pay to Monica. हमारे पास 19,500 है, हम पहले वो ही पे कर देंगे। 19,500, ठीक है? लेट मार्केट, यहाँ पे बचा हमारा 0, यहाँ पर हमारे पास बचा 26 to 50. ओके। नाउ विल गो फॉर लास्ट रियलाइजेशन। एड थर्ड रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। कितना आ रहा है थर्ड से? 19,000। अभी थर्ड में बहुत प्रॉब्लम है, लुक एट इट। थर्ड में एक तो पहले हमको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या करना है बेटा? एडजस्टमेंट करना है। 2000 प्रोविजन था और 1200 एक्चुअल खर्चा हुआ, तो 800 वो ऐड करना है हमको, एक्स्ट्रा प्रोविजन, ठीक है? साथ में एक 600 हम पे कर रहे हैं, वो माइनस करना है, ठीक है, एक्सपेंसेस। और साथ में एक 1000 जो सोनिका से आ रहा है वो ऐड करना है हमने। तो ये सारे किसमें आएंगे? लास्ट रियलाइजेशन में। क्यों लास्ट में? क्योंकि इसके बाद में और कोई रियलाइजेशन नहीं, सो ऑल द एडजस्टमेंट टू बी डन इन द लास्ट रियलाइजेशन इटसेल्फ। सो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले ऐड कर लेते हैं, चलो ऐड एक्सेस प्रोविजन ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना था? 800, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा हो गया 19,800 लेस, देखिए यहाँ पर 600 हमारा क्या एक्सपेंसेस है, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है? तो लिखेंगे एक्सपेंसेस विच इज नॉट, so expenses for which provision was not made. Outstanding expenses. हाँ हाँ, आउटस्टैंडिंग था, लेकिन आउटस्टैंडिंग कब होता है बेटा? जब हम उसका प्रोविजन बनाते हैं। हमने प्रोविजन बनाया नहीं है तो डायरेक्टली हमको पता लगा ये भी खर्चा है यार, हम तो भूल गए इसका बनाना, तो हम डायरेक्टली माइनस कर रहे हैं उसको। Unrecorded. एक्सपेंसेस फॉर विच, हाँ, प्रोविजन इज नॉट मेड। एक 600 था हमारा, तो 600 को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर लेते हैं।
ठीक है. So here minus करने का we got 19,200. 19,200. ठीक है. Now we will going to add cash received from Sonika against stock. 1,000. ठीक है. कितना बचा टोटल आपके पास में अभी देखिए 20,020 बचा 20,200. नाउ वी विल पे टू मोनिका. मोनिका को 500 देना रह गया था ना. सो हियर वी राइट पे टू मोनिका 500 उसका बाकी रह गया था. सो वी विल पे 500 टू मोनिका. ओके. सो हियर आर बैलेंस कितना बचा 19,700. और यहाँ पर स्ट्रेट अवे. ठीक है. नाउ वी विल पे टू मोनिका एंड सोनिका. कितना पे करना था मोनिका एंड सोनिका. कितना पे करना था 15,000. 15,000. उसको हमको पता था 10,000 टू पे टू मोनिका एंड 5,000 वी हैव टू पे टू सोनिका. ठीक है. डैश सेकंड प्रोपोर्शनल कैपिटल हम पे कर रहे हैं तो हम सबको टोटल कर सकते हैं. ठीक है. सो हियर वी आर गेटिंग 16,250. ठीक है. यहाँ पे कितना बचा हमारा 8,125 और यहाँ पे बचा 8,125. देखो हम रेशो में आ गए. ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल कैपिटल के ऑप्शन नहीं बचेगा क्योंकि हमने बीच में 500 रुपए ऐड किए थे. ठीक है. सो हियर अमाउंट विल बी 4,700. okay, and now this amount will be paid to less paid to all partners. ठीक है. इसको डिवाइड करो पार्टनर्स में. क्या रेशियो था पार्टनर्स का 2:1. 2:1:1. हाँ 2:1:1 तो 4 से डिवाइड करो. 1175. पहले वाला कितना है 2,350. 2,350. सेकंड वाले का 1,175. 1,175. Let's see whether they are getting loss as per the ratio or not. रेशियो के हिसाब से आ रहा है 2:1:1. So this is how your entire problem looks. Is it okay with you? Yes, sir. Okay. हाँ, please ask me if you have any question. Time is almost done. 2 मिनट ऊपर चले गए हम लोग.